Hello, good afternoon. Very good afternoon. Give Sunday's test, that self test. छोटा टेस्ट दिया था वो 11 क्वेश्चन सॉल्व. आंसर्स बाद में. अभी अटेम्प्टेड नहीं, अभी भी चांस है, अभी भी कर देना. ये ना एग्जाम आपको खुद को देना है. ओके, आई कांट हेल्प इट आउट. दोगे तो प्रैक्टिस होते रहेगा, बाकी कुछ नहीं तो भूल जाएंगे पीछे जो सीखा था वो. सीरीज भूल जाएंगे, सिलोजिज्म के स्टेप्स भूल जाओगे, डायरेक्शन भूल जाओगे. इसलिए टेस्ट देना है. एवरी संडे I'll do that, and then it is told to me that is it can be done in this software itself. I'll see how it can be done. Okay, I'll learn that, and then we'll have the test online itself. So it's 2:45. Let's start with the lecture. Homework था, जानबूझ के मैंने थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स दिए थे क्योंकि आप घर पे करने वाले. टाइम था आपको. ओके, हो सकता है आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो अपने मोबाइल पे होता है उसका इस्तेमाल करें. ओके, इसमें मैं थोड़े से बड़े नंबर दिए थे. मालूम नहीं आप लोगों ने ट्राई भी किया या नहीं किया. ओके, विल डिस्कस दैट. Yes. Rather, you can say 4 sums because in the third there were 2 parts. First answer, anybody? Answer of the first one. Anybody? Right, wrong? Immaterial, दोस्तों. Good, you are getting that answer. Let me check what is my answer. Any more answers? Okay. And remember, answer, I don't know now what is my answer. If it goes 5, 10 paisa, 50 paisa here and there, still right. Okay. Present value of an annuity 2000 for 15 years. At 4.5% per annum is क्या हो गया? 21,479.0. कैसे बता रहा हूं, देख लेना. Now I've given their P, N, I का value. Okay. Afterwards, after today's lecture is over, you try it out once you know that value of P. क्या दिया है? The present value of an annuity. Everyone, please pay attention carefully now. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या पूछा है, कैसे समझने का, हमको क्या ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा. Everything will be discussed today. So pay 100% attention. थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना. Okay, let's say. Now what they're saying, the present value of an annuity of 2000 for 15 years at the rate 4.5% per annum is. Now what is given, what is asked, ये देखना जरूरी है. The 2000, is it a present value or is it an annuity? क्या पता चलता आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद? What it is? Is it present value तो PV बोलो, annuity तो A बोलो चलेगा. 2000 is what? 2000 is annuity. Correct? Correct.
एन्युइटी ऑफ 2000, एन्युइटी ऑफ 2000। और आपको क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, व्हाट टू फाइंड आउट? V या PV, प्रेजेंट वैल्यू बोलो, दैट इज V. V, PV is one and the same. Present value बोलो, V बोलो, one and the same. Screen sharing बंद हो गया? Yes, some problem. I'll again do the screen sharing. Just wait. Yeah, I know screen sharing has stopped. Just wait. Can you see the screen? Can you see the screen? One of you type. Enough. Now again re-log in. क्या हो गया? You can't? Wait. Wait. Just wait. At present, screen sharing option is not available to me on my screen, so I can't continue. Please wait. I will try. Yeah, screen sharing came. Hello, are you there? Are you there? One or two of you type there. Okay, screen sharing option came in. Are you there? Shall I continue? Three of you type S. Enough. Chalo. Enough. Okay, so you are there. I'll continue. Now I'm not looking at the chat box. I'm continuing. I'm looking at the question. Okay, so don't type anything now. Now, what the question says? At present, the present value of an annuity of 2000 for 15 years at the rate 4.5% per annum is 2000 annuity. इतना तो समझ में आ गया आपको? आज अभी इसके बाद ये होने के बाद 3 questions होने के बाद we'll discuss the formula. That time I'll tell you when annuity is there, we'll have to go for one of the two formulas. One is future value and the other is present value. Here it is asking you the present value, so we'll have to go for present value. I hope you know that formula, present value. Present value formula says A equal to, that is annuity is equal to V, that is present value, upon P in bracket N comma I. Now P N comma I is not there. I'll have to calculate, and I got it. Here you can see I've told you what I got it. 10.7395457263. How do I get it? What is the formula of P N comma I? P N comma I is equal to 1 plus I bracket raised to N minus 1 upon I into 1 plus I into 1 plus I into in bracket 1 plus I bracket raised to N. That's the formula. And then I get that P N comma I 10 point. Here it was 15 years. So 4.5 is the per annum rate. So in point it will be 0.045. Add 1 to it. That comes to 1.045. Rest to 15. Rest to 15. Just 1 second. Now, first of all, let me know whether you want me to solve this fully.
पूरा सॉल्व करो, हाँ या ना? Okay, fine, I'm solving, just give me a minute. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Yes, I'm solving, just wait. Values you will remember 2015 and 4.5. Okay, required to tell me because I'll have to go to Word. Yes, here let me increase the font size also so that you will not have a problem. 24 font size. Okay. Now here, what is that formula? A equals to capital A is equal to capital V divided by, I'm taking here divided by like this, P in bracket N comma I, and I'm giving you here value of your 1.045 raised to 15. I'm giving this value raised to 15. I'll take that 15 up, raised to is equal to 1.9352824431. The value. Now the formula. If somebody is asking me that, how do I know that annuity is due or annuity regular? If problem is silent, it should be annuity regular. If it is annuity due, clear-cut instruction should be there. That is, they have saved at the beginning, or it is done at the beginning. Starting word hona chahiye. Okay. If silent, normally what happens? What happens is regular. Regular is always at the end. Okay. When you solve the sums, I'll say majority of the sum, even 95% of the sum, it will be regular. Very few sum, ekhad dusra sum aa jayega where you require due. Okay. Now, here these values are provided to you. Now you know the formula of P in bracket I raised to, N comma I. P formulas you'll have to buy at, dear student. N comma I. What is this formula? Is equal to, in bracket I am putting here, or rather I put in big bracket, this bracket, in bracket 1 plus I bracket raised to, 1 plus I bracket raised to, and I'll do that bracket raised to minus 1. This is numerator, divided by denominator is I in bracket 1 plus I bracket raised to N.
Yes, I'll do this raised to n raised to n. Is my formula correct? That n I am doing raised to. Is my formula correct? सर क्या मालूम? फॉर्मूलाज बायहार्ट करना है, फॉर्मूला बायहार्ट करना है आपको. Now you calculate. I'm waiting. I'll do it. You calculate now. फॉर्मूला करेक्ट ही है मेरे को सारे फॉर्मूलाज याद है. मेरा कोई तकलीफ नहीं है फॉर्मूलाज में आपको तकलीफ होगा. Today I'll tell you how to remember the formulas also. So now I gave you formula. I gave you 1.05 बराबर है ना. रेट वही है अपना 4.5. So add करने के बाद 1. That means what I've given here you is this value of this. तो take that value -1 करना है. बाद में अभी कैलसी पे क्या करेंगे, वो वैल्यू है I into. So on a calculator, how to do it on the fast calculator? Let's do this part. ये वाला पार्ट करते. क्या बोल रहा है ये? I into 1 plus I raised to n. What is 1 plus I? What is 1 plus I? At least one of you reply. 1 plus I की वैल्यू. Just 1 plus I. That's all. Raised to n नहीं पूछ रहा हूं मैं. 1 plus I equal to. In bracket there is 1 plus I. I into in bracket 1 plus I. I want value of 1 plus I. Value of 1 plus I is 1.045. Correct? Raised to n value दिया है उधर. So everyone be ready with the calculator. Be ready with the calculator. Top there is a value 1 point. Take on your calci. कैलकुलेटर पे वो वैल्यू ले लो 1.9352824431. अगर पूरा नहीं आ रहा है वैल्यू आपके कैलसी पे तो टेक व्हाटएवर यू कैन. 1.935282 इतना भी ले देंगे तो भी चलेगा. 6 डिजिट लेते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद तो भी इनफ है. बट इफ यू कैन टेक फुल 1.9352824431. even I am doing that on my calci. I'm taking that value 1.93 52824431 लिया सबने कैलसी पे. नाउ इनटू आई है ना, तो इनटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? वैल्यू ऑफ आई इज 0.045. तो इनटू 0.045 इज इक्वल टू आई इनटू आई प्लस 1 रेस्ट टू n किया. At least one of you just type 6 digits after the decimal point. How much you got? 0 point something मिला है. क्या मिला है? At least one of you type. तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ. ना. I am talking about just I into I plus 1. Yeah, correct. 0.0. Yeah, 0.8080708. Yeah, correct. आ गया सबको. Now on a calci you press m plus दबाओ एक ही बार. once press m plus. now अब आते हैं हम लोग न्यूमरेटर के पास. न्यूमरेटर में क्या, रुको आराम से, कैल्सी पे वैसे ही रहने देना, कैल्सी पे हाथ नहीं लगाओ. क्या बोल रहे हो लोग? 1 plus I raised to n minus 1. we know 1 plus I raised to n that value, उसमें से 1 minus orally कर सकते हैं ना. 1.9352824431 में से एक गया तो कितना बचेगा? 0 point. so take on the calci directly. don't press any button. directly press 0 point या point डायरेक्ट करेंगे तो भी चलेगा. 9352824431. press divide by sign. divided by. now press that MRC, memory recall. MRC divided by MRC, वही वैल्यू आएगा जो पहले आया था 0.87. now press equal to and tell me the value. at least one of you type the value.